Yes, sir. Yes, sir. Very good है जी. So this is your London Convention and protocol भी आएगा इसके साथ. ये बुक तो वो है but briefly डिस्कस करेंगे सर. छोटा सा टॉपिक है ये वाला और जो इंटरवेंशन कन्वेंशन है स्मॉल टॉपिक्स शायद मास्टर जब करेंगे तब आपका वो हो जाएगा काफ़ी लंबा चौड़ा. इसको लंदन कन्वेंशन LC 72 भी कहते हैं. और ये क्या है? कन्वेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड अदर मैटर. ये तो लंदन कन्वेंशन हो गया. एंड 96 का प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन, ये जो ऊपर वाला था उसमें एक प्रोटोकॉल आया था, प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर्स 1972 में, एज अमेंडेड इन 2006. थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड छोटा सा है ये. United States and other countries became increasingly concerned about the environmental impacts of human activities on the marine environment, including the uncontrolled disposal of waste into the ocean. अब हमारे टाइम में भी हमको याद है कि जैसे हम लोग होल्ड क्लीनिंग करते थे तो होल्ड में जो भी रेसिड्यू था, आयरन ओर या जो डनिश था, whatever waste, उसको उठा के हमने डंप कर दिया into the sea. Right, इतना वो नहीं था उसको, but it became a concern. So, convention on the prevention of marine pollution by dumping of waste and other matters, one of the first international agreements for the protection of the marine environment from human activities. So, सबसे पहले ये आया था. Now, it applies to deliberate disposal of waste at sea of waste or other matter from vessels, aircrafts, platforms, and other man-made structures at sea, as well as to the deliberate disposal at sea of vessels, aircraft, platforms, or other man-made structures themselves. पहले क्या करते थे, तो ये हो गया ना, जहाज को बीच समुद्र में ले गए और वहाँ पे उसमें होल कर दिया, एक्सप्लोजन करा दिया, उसको डुबा दिया. These kinds of things used to happen earlier days, but then this came into existence. So contracting parties, all those countries which are signatory to this convention, they have agreed to control dumping by implementing regulatory programs to assess the need for, जरूरत है तो, and the potential impact of such dumping. ठीक है सर. So they will have regulatory programs to assess the need for dumping और उसका जो impact हो सकता है. Now this convention requires that contracting parties issue a permit for the dumping of waste and other matter at sea, and generally prohibits the dumping of certain hazardous materials. So in case somebody needs to dump something, necessary है, within the regulations fall करता है, then certificate permit is required. And of course, certain types of hazardous materials are prohibited. So, sir, I don't know, but the general question which comes is what you write short notes on. Yeah, dumping. What is the dumping convention? Yeah, explain the dumping convention. Right, rules, regulations, वो सब नहीं है, but यही आपको short notes में इस तरह से डाल सकते हैं. So, contracting governments, अगर आपको कुछ dump करना है, you require a permit to dump something out at sea, and that permit also will prohibit discharge of certain types of hazardous materials. Over time, contracting parties to the London Convention have amended the treaty by banning ocean dumping of certain waste and by promoting pollution prevention and sound waste management. So जैसे ओवर टाइम मतलब ये जो गार्बेज का था, ये स्लज का था, पहले तो ये ना, इवन स्लज यूज्ड टू बी पम्प्ड आउट. इवन योर ऑयली वाटर जो सेपरेटर नहीं था, तो बिल्ज वाटर उसको ऐसे ही पंप आउट करते थे. नॉर्मल प्रैक्टिस थी, यू नो, बिल्जेस पंप आउट कर दो. बट ओवर टाइम थिंग्स चेंज और ये बैन हो गया था. नाउ व्हाट डज इट कवर? It covers the deliberate disposal at sea of waste and other matter from vessel, aircrafts and platforms. इसको cover करता है.
It does not cover discharges from land-based sources, such as the pipes and outfalls, waste generated incidental to normal operation of vessels, or placement of materials for purpose other than only disposal, providing such disposal is not contrary to the aims of the convention. So it does not cover discharges from land-based sources. बहुत सारी जगह में आपने देखा होगा सूवेज भी द सिटी का जो वेस्ट होता है, आई थिंक स्पेशली इन बॉम्बे में एक दो जगह में है ऐसा. It does not prohibit that. Now this convention was called for by the United Nations Conference on Human Environment. The treaty was drafted at the Intergovernmental Conference on the Convention of Dumping of Waste at Sea, and it was open for signature in December 1972. Now, इस कन्वेंशन के 22 आर्टिकल्स हैं. Once again, ये आर्टिकल्स नहीं आएंगे आपने, बट हर एक आर्टिकल में डिस्क्राइब कर रखा व्हाट कैन कैनॉट बी डिस्चार्ज, और उसके ये जो एनेक्सेस हैं, 3 एनेक्सेस हैं इसके साथ, 22 articles and 3 annexes. Now it follows a blacklist, graylist approach to regulating ocean dumping. For example, Annex 1 है, उसमें materials मतलब जो blacklist है generally may not be ocean dumped, उसको नहीं कर सकते हैं. Though for certain Annex A materials dumping may be permissible if present only as trace contaminants and rapidly rendered harmless. So Annex 1 में जो है आपका blacklist का है, things which cannot be dumped. However, अगर छोटे छोटे traces मिल रहे हैं and rapidly it is rendering it harmless, so then it may be permissible. Annex 2 materials grey list के हैं, require special care, you can dump them but with care. And Annex 3 lays out general technical factors to be considered and establishing the criteria for issuance of the permits. अगर कुछ चीज़ आपको करनी है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि on what basis will this thing be dumping permits will be given. Okay. Main objective क्या है of the dumping convention is to prevent indiscriminate disposal at sea of waste that could be liable for creating hazards to human health, harming living resources and marine life, damaging the amenities or interfering with the legitimate uses of the sea. This is the main objective. Prevent indiscriminate disposal that could harm or create hazards to the human being, human health, marine life, damaging the amenities which are available, interfering with the legitimate use of the seas. Now, the scope of it covers all marine waters other than internal waters. Internal waters मतलब your rivers हो गए, estuaries हो गए इनको, of the state, and prohibits the dumping of certain hazardous materials. Now, हाँ जैसे हमारा है गंगा रिवर है, गंगा रिवर में या यमुना में ये नहीं फेंकना है, वो नहीं फेंकना है, unless it is treated, सब फेंकते हैं, वो बात अलग है, या people do not treat it before dumping it into the rivers. But this convention does not cover that. The scope is marine waters other than internal waters of the state and prohibits the dumping of certain hazardous material. It further requires a prior special permit for dumping of a number of other identified materials and a prior general permit for other waste or matter. ये जो प्रोटोकॉल है आपका, एक तो आपका वो था कन्वेंशन था और उसमें प्रोटोकॉल आ गया. The protocol is intended to be more protective of the marine environment. London Protocol क्या करता है? Expressly prohibits incineration at sea and the export of waste or other matter for the purpose of ocean dumping. ये prohibit कर रहा है हमारा the London Protocol.
prohibits incineration at sea, and the export of waste and other matter for the purpose of ocean dumping. Now, under this protocol, dumping of all waste and other materials is prohibited except the following materials as listed in Annex 1, which is this thing, जहाँ पे आपका थोड़ा थोड़ा उसमें वो है traces है. So dredged material, sewage sludge, fish waste or material resulting from industrial fish processing operation, vessels or platforms or other man-made structures, inert organic geological material, organic material of natural origin, bulky items primarily comprising iron, steel, concrete, etc., harmful, and similarly unharmful materials for which the concern is physical impact and limited to the circumstances where such wastes are generated at locations with no land-based activities. ये है आपका under the dumping of all waste and other material is prohibited except the following materials listed in Annex 1, right, which may be considered for dumping, may be considered. So all these are coming in Annex 1 of the protocol, but वो permission दी जा सकती है, like it is saying here, is permitted, एक मिनट जरा underline कर दो, is prohibited except the following materials. Okay. तो ये तुम्हारा लास्ट में आ गया आपका यहाँ पे ये वाला carbon dioxide streams from carbon dioxide capture processes for sequestration and sub-seabed geological formations. So these things are exempted, but not totally exempted. You need a permit for that because they are all listed in Annex 1 or Annex 1 में blacklist है. So main question क्या आता है इसमें? Briefly explain the contents, briefly explain the London Convention और उसका main objective क्या है. ओके सर, स्टार्ट करें? यस सर. Yes, sir. ओके सर, अब ये जो कन्वेंशन है रिलेटिंग टू इंटरवेंशन ऑन द हाई सीज इन केसेस ऑफ ऑयल पोल्यूशन कैजुअल्टीज, मतलब पोल्यूशन हो रहा है हाई सीज में हो रहा है, एंड you being a coastal state or you being a party who is suffering from this, so आपको थोड़ा compensation देना है, नहीं देना, कब क्या कैसे देना है, all that is discussed in this. Again इस पे भी काफ़ी articles हैं, I think 19 articles and annexes वगैरह हैं इसमें, chapters भी हैं, but in brief discuss this here. So it's an international maritime convention affirming the right of the coastal state. वो coastal state जो है उसके right को affirm कर रहा है that they can take such measures on the high seas as may be necessary to prevent, mitigate or eliminate grave or imminent danger to their coastline or related interest from pollution or threat of pollution of the sea by oil following a maritime casualty. So मतलब कोई casualty हुई है, कोई pollution हुआ है, या whatever happened, there has been a casualty, maritime casualty, and there is danger of, you know, your coastline, your interests वगैरह affect होने के chances है, then you have or you can take measures on the high seas to prevent it, mitigate or eliminate grave and imminent danger to your coastline, right? Threat of pollution of the sea by oil following a casualty. अब ये तो बहुत famous disaster हुआ था, as you know, 67 में, the Torrey Canyon disaster, when oil spilled from a tanker severely damaged the coastal and marine environment, wildlife of the coastal state.
This signaled a need to empower the coastal state to take necessary measures to protect itself from pollution incidents outside the state's territory, that is high seas में. तो इस बात ये हुआ था that states were allowed to take preventive measures, protective measures to mitigate it or eliminate it. Now, in doing so, it was deemed necessary to protect the legitimate interest of the ship owners, cargo owners, and the flag states, and the principle of freedom of the high seas. Right? तो ये ध्यान में रखा गया कि जो इंटरेस्ट है, जो legitimate legal interest जो है ship owners के, cargo owners के, उनको protect किया जाए. Now, this convention was drafted within the framework of the IMO and adopted in 1969, entered into force in 1975. 73 में इसका protocol भी आया था relating to intervention on the high seas in case of marine pollution by substances other than oil. This was adopted, extending the provision of the scope of this convention to hazardous substances. पहले क्या था, सिर्फ oil था, right? Coastal जो oil से pollution हो रहा है. And it was this protocol was extended to include hazardous substances also. और कौन-कौन से substances थे? So the list of the hazardous substances covered under by this protocol was amended and extended in 91, 96, 2002. So protocol में ये hazardous substances were also included. वो जो लिस्ट थी hazardous substances की वो continuously change होते रहती है. Now, this convention applies to all merchant ships. Now, ships जो which are owned and operated by the government for non-commercial purpose, warships है, उनको ये apply नहीं करता है. ठीक है? It does not apply. It applies to all seagoing vessels except warships and other vessels owned or operated by the state and used on government non-commercial service. उनको apply नहीं करता है. Now, while exercising this right to take measures necessary to prevent, mitigate, etc. of the coastline, the coastal state is obliged. कुछ चीज obligations है, which the coastal state must do. So, कोई incident हो गया है under this convention, intervention convention, the coastal state has the right to take measures to prevent, mitigate, eliminate grave and imminent danger to the coastline. But कुछ obligations है उसके. The coastal state is obligated to, first, prior to taking measures, to consult other affected states, include the flag state of the ship, the cargo owner, and independent experts from the list maintained by the IMO. So ये नहीं है कि सीधा कुछ हो रहा है, सीधा वहां पहुंच गए. You need to consult. It is your right under the convention, but you are obligated. The coastal state is obligated to consult other affected states, including the flag state of the ship and other independent experts जिनकी लिस्ट IMO ने मेंटेन कर रखी है. Second is use the best endeavors to avoid any risk to human life and to afford persons in distress any assistance which they may need. So fire हुई है ये सब, तो पहला risk of human life को बचाना है, give assistance to those people who are in distress, and then at the same time consult with the other states affected and render assistance and take any measures. Notify all interested states.
ये जब आप एएसएम में जाओगे ना सर, वहाँ पे एक टॉपिक है आईएमओ का, विच इज कॉल्ड एक कोड है, कैजुअल्टी इन्वेस्टिगेशन कोड, CIC बोलते हैं, कैजुअल्टी इन्वेस्टिगेशन कोड आईएमओ का, राइट। तो ये कोई भी कैजुअल्टी हो एनीवेयर, इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो उसके अंदर भी आपको ये राइट्स दे रखी है। तो कोई भी कैजुअल्टी हो, उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? दो टाइप के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन होता है जो आईएमओ करती है, पता करने के लिए क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। कोई नया रेगुलेशन लेके आया, नए ट्रेनिंग लेके आया, या नया कुछ करे। और एक होता है दूसरा कि भाई किसको लायबिलिटी है, कौन पैसा भरेगा, किसकी नौकरी खतरे में डाले, स्केपगोट ढूंढने के लिए, आप टू फाइंड फॉल्ट एंड अपोर्शन लायबिलिटी। एक वो होता है। आईएमओ का मतलब ये नहीं है, आईएमओ तो कहता है मुझे सिर्फ ये बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि दोबारा ना हो। हम नए रूल्स रेगुलेशंस ले आएंगे। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करना है, वो आईएमओ का काम नहीं है। तुम्हारा लाइसेंस वो ही कैंसिल कर सकता है जिसने तुमको इश्यू किया है। सो इंडियन लाइसेंस डीजी ने दे रखा, तो डीजी ही कैंसिल कर सकता है, बस, और कोई नहीं। सो एनीवे, सो नोटिफाई ऑल इंटरेस्टेड स्टेट, जो भी इंटरेस्टेड है उन सबको बताना है। और कौन हो सकता है वो स्टेट? एक वो फ्लैग स्टेट हो गया, और जैसे लेट्स से आजकल ये श्रीलंका में जो वो हो रहा है, तो अफेक्टेड हो सकता है, माउस हो सकता है। वो जो शिप है उसमें जो क्रू है वो इंडियंस भी हो सकते हैं, फिलिपिनोस भी हो सकते हैं, तो फिलिपिनोस भी अफेक्टेड है, उनको भी इन्फॉर्म करना है, राइट। फ्लैग ऑफ द शिप कुड बी अ सिंगापुर फ्लैग, क्रू उसमें इंडियन और फिलिपिनोस है, तो सिंगापुर को भी इन्फॉर्म करना है। सो जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इंटरेस्टेड स्टेट है, सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड स्टेट्स कहते हैं, उन सबको बताना है। एनी स्टेट विच हैज लॉस्ट देयर लाइव्स, मतलब लेट्स से कोई फिलिपिनो, इंडोनेशियन या कोई भी क्रू है, तो उनके स्टेट्स को भी बताना है, फ्लैग स्टेट्स को। ओके, देन एंश्योर दैट ऑल अप्रोप्रिएट मेजर्स, all measures are appropriate to the actual threat. जो भी measures ले रहे हैं, they are proportionate, मतलब आप कम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। Take compensation to the extent of the damage caused by measures which exceed those reasonably necessary to achieve the end. To achieve the end means इसमें जो Article 1 है, Article 1 में कुछ वो लिखे हैं कि what does this convention want to achieve. तो जिसका भी जो भी नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा, उसको सबको कंपेंसेशन दे दिया जाए, राइट। क्लीन अप हो जाए, लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ ना हो, वो जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पर्टिकुलर कन्वेंशन, वो अचीव हो जाए। सो पे कंपेंसेशन measures which exceed those reasonably necessary. Now the states parties to the convention, वो क्या कहते हैं to the present? First, conscious of the need to protect the interests of the people against the consequences of the casualty. एक, दूसरा, convinced that under these circumstances measures of exceptional character to protect such interests might be necessary on the high seas. So ये जब सब सारे states हैं, they have agreed to do as follows. क्या क्या conditions हैं? यहाँ पे आपको मैं इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं मैं उन्हीं को ला रहा हूँ। बाकी के जो आर्टिकल्स हैं मेरे ख्याल से 8 या 9 आर्टिकल्स हैं, एक मिनट ठहरते हैं, 8-9 आर्टिकल्स हैं इसमें, छोटे छोटे हैं, नॉट टू वरी अबाउट, हो जाएंगे। हाँ 8 है शायद, हाँ 8 आर्टिकल्स हैं, और उसके बाद बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के हैं। सो व्हाट हैव द स्टेट्स अग्रीड टू डू? They have agreed that parties to the present convention may take such measures on the high seas as may be necessary to prevent. ये जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, पहला तो ये है, they may take
necessary measures. Acha, following upon acts which related to the casualty which were reasonably expected to result in major harmful this thing. कोई casualty हो जाने के बाद following upon a maritime casualty or act related to such as a casualty which may reasonably be expected to result in major harmful consequences. Casualty के होने के बाद. However, no measures shall be taken under the present convention against any warship or ships which are incorporated. So that means the convention does not apply to them. उनके अगेंस्ट आप कुछ नहीं कर सकते. ये आर्टिकल 1 बोलता है. आर्टिकल 2 थोड़ा सी डेफिनेशन दे रहा है यहाँ पे कि मरीन कैजुअल्टी क्या होती है. ना ये मरीन कैजुअल्टी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंटरवेंशन कन्वेंशन है. मरीन कैजुअल्टी एज पर द मर्चेंट शिपिंग एक्ट वो अलग होती है. मरीन कैजुअल्टी एज पर द कैजुअल्टी आईएमओ का जो कैजुअल्टी इन्वेस्टिगेशन कोड है उस पर थोड़ी सी फर्क है, बट एमएसए और आईएमओ का काफ़ी सिमिलर है और यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है. So means collision between the ships, standing, grounding, incident of navigation, occurrence on board a ship or external to it resulting in material damage or imminent threat damage to the ship and cargo. Ship का मतलब क्या है? Definition: any seagoing vessel of any type whatsoever, any floating craft, with the exception of an installation or device engaged in the exploration of seabed, subsoil, उनको छोड़ के वो नहीं माने जाते हैं. Oil means crude oil, fuel oil, diesel oil, lubricating oil. Related interest means the interest of a coastal state directly affected or threatened by the maritime casualty. Right, for example, oil slick हुआ है and that oil slick is moving towards Sri Lanka. Incident हुआ है Indian waters में, but oil slick is moving towards Sri Lanka. तो Sri Lanka is substantially interested state बोलते हैं, यहाँ पे related interest बोला जाता है. Then maritime coastal, हाँ ये सब आपका उसी डेफिनेशन में आ रहा है. पहला तो ये देख लेता हमने, ship means A, B, C. Then maritime coastal port estuaries activities including fisheries activities constitute an essential means of livelihood, tourist attraction of the area concerned. The health of the coastal population and the well-being of the area concerned, including conservation of marine life, resources, wildlife. Organization means intergovernmental maritime consultative organization. Intergovernmental maritime consultative organization. Article 3 में ये बता रखा है कि when you are exercising your right to take measures, जो आर्टिकल 1 में दे रखे हैं that you can take certain measures, और वो राइट्स को आप एक्सरसाइज कर रहे हैं. So before any measures are taken, you will consult a coastal state. Right, before taking a coastal state shall proceed consultation with the other states जो भी interested है, या ship owner, cargo owner उसके साथ. The coastal state shall notify without delay the measures to be taken to any persons, physical or corporate, made known during the consultation to have interests which can be reasonably expected to be affected by those measures. The coastal state shall also do account the following. Now, यहाँ पे coastal state जो है, before he takes any measures, of course he has to take consultation, notify all the states who are interested, and also inform or notify the what do you call the owner of the vessel, the cargo, insurance, जो भी है उन सबको इन्होंने इकट्ठे notify करना before he takes, which can be reasonably to have interest, which can be expected to be affected by those measures. उन सभी को inform करना है जिसके इसमें जो interest है they are being affected. Before any measure is taken, the coastal state may proceed to a consultation with the independent experts, जिनके नाम एक लिस्ट में मेंटेन किए गए हैं by the IMO. ये उसके obligations हैं.
In cases of extreme emergency requiring measures to be taken immediately, the coastal state may take measures rendered necessary by the urgency of the situation without prior notification or consultation, or without continuing consultations already begun. So grave situation है, तो सबसे परमिशन लेने की टाइम नहीं है. You will be losing out on time, so it is better that you go ahead and take this thing measures. एक मिनट सर, हाँ, just 1 minute. Okay, guys, can you hear me now? हाँ जी, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So in extreme emergency, क्या कहते हैं, the state जो है आपका, जो coastal state है, he need not wait for the what do you call, discussing with consultation with the other states, right? Or क्या कहते हैं, जो दूसरी parties हैं, owners, cargoes, not necessary. He can continue taking whatever measures he thinks is best. Then coastal state shall, before taking such measures during the course, use his best endeavors to avoid any risk to human life and to persons in distress, any assistance they may need. So, पहले भी डिस्कस किया हमने कि अगर पहले कोई कैजुअलिटी हो रही है तो पहले कैजुअलिटी को अटेंड करो, शिप्स को, जो क्रू है उनको अटेंड करो, गिव देम व्हाटएवर असिस्टेंस इट इज रिक्वायर्ड, and then take whatever measures that he has in mind. But first is to avoid any risk to human life and give assistance to the person who are in distress and who may need such assistance. Measures which have been taken in application as per Article 1 shall be notified without delay to the states and to the known physical or corporate persons concerned. तो जो भी एक्शन वो ले रहे बता देना है. Article 4, under the supervision of the organization, there shall be set up and maintained a list of experts contemplated by Article 3 of the present convention, and the organization shall make necessary and appropriate regulations. So list of those experts. Nomination to the list may be made by member states. मतलब किसको nominate करना है, उनकी जो लिस्ट है मेंबर स्टेट्स जो है, फॉर एग्जांपल वो आपका कौन सा टक कंपनी कौन सी जो सैल्वेज करती है, स्मिथ एंड लॉयड, सो जहाँ की भी है, डच की है, तो
the member state can recommend his name there कि लिस्ट में इसका नाम डाल दो स्मिथ एंड लॉयड का या दूसरी जो भी कंपनीज हैं. The experts paid on the basis of services rendered by the states utilizing their services. So वो जो लिस्ट है उसमें किसका नाम जाएगा? Member states will recommend that. Then measures taken by the coastal state in accordance with Article 1 shall be proportionate to the damage. ठीक है सर, प्रोपोर्शनल टू द डैमेज. ये नहीं कि डैमेज 1000 का हुआ है और आप 10,000 खर्चा कर रहे हो, उसी के प्रोपोर्शन में वो लोगे आप. Such measures shall not go beyond what is reasonably necessary to achieve the end mentioned in Article 1. Article 1 में जो objectives हैं उसको मीट करने के लिए जो भी measures लेने हैं वो लेने हैं to achieve the end, and shall cease as soon as that end is achieved. They shall not unnecessarily interfere with the rights of the interests of the flag state, third parties. Considering whether the measures are proportionate, जो हम काम कर रहे हैं, जो casualty है, उसमें जो हम measures ले रहे हैं वो proportionate है या नहीं है, उसके लिए the following is taken into account: the extent and probability of imminent danger, damage or danger, the likelihood of those measures being effective, the extent of the damage which may have caused by such measures. इसको ध्यान में रखते हुए measures लेंगे. Article 6. Any party which has taken measures in this convention shall be obliged to pay compensation. Any party which takes measures causing damage to others shall be obliged to pay compensation to the extent of the damage caused by this thing. So, आपका जो coastal state है, he is taking measures, और measures लेते time causing damage to others, then that coastal state will be liable to pay damages caused by the measure which he has taken. Article 7. Except as specially provided, nothing in the present convention prejudice any right, duty, privilege, or immunity, or deprive any of the parties or interested physical corporate from any remedy otherwise applicable. ये आपको फ्रीडम नहीं दे रहा है, ये किसी के राइट्स, किसी के ड्यूटीज को, प्रिविलेजेस को प्रेजुडिस नहीं कर रहा, उसको रिस्क में नहीं डाल रहा है. Neither it is depriving any of the parties or the any interested physical or corporate person, किसी आदमी को भी, of any remedy otherwise applicable. किसी के उसको curtail नहीं करता है, rights, privileges, duties. कोई controversy होती है between the parties as to whether the measures taken were in contravention of the present convention, कि हमने जो काम किया है वो contravene करता है present convention को, या the whether compensation is obliged to be paid, and to the amount of such compensation shall be settled by negotiation between the parties. कितना देना है, नहीं देना है, या जो dispute हो रहा है, तो वो सब will be settlement between the parties involved, between the party which took the measures. For example, उसने measures लिया है, and the physical or corporate claimant has not been possible, and if the parties do not otherwise agree, they may submit this thing to a conciliation. So आप arbitration भी कर सकते हैं. If you are not satisfied with the agreement between the two parties, the compensation which is being paid to you, then either you agree between the two parties, आपस में कर लिया, or you can bring forward your dispute to the for conciliation, and conciliation में नहीं चलता है तो arbitration में चले जा सकते हैं. The party which took the measures shall not be entitled to refuse or request for conciliation under this thing solely on grounds that any remedies under municipal law have not been exhausted. मतलब आप local law
let's say two parties are there, you and I are there, right, different countries में, और हम लोग agreement में आ रहे हैं, तो we cannot request for conciliation. आप मुझसे कह रहे हो भाई चलो कंसिलेशन कर लेते हैं, आर्बिट्रेशन कर लेते हैं, सेटल डाउन करते हैं सामने सामने बैठ करके, और मैंने यहाँ पे लॉ में अप्लाई कर रखा है, राइट, लेट्स से लोअर कोर्ट में, तो बता नहीं जी लोअर कोर्ट नहीं जी, हायर कोर्ट में, हायर कोर्ट नहीं जी, अब सुप्रीम कोर्ट में, राइट. सो neither party will refuse for a conciliation by saying that कि अंडर म्यूनिसिपल लॉ मेरे अभी सारे के सारे जो मीन्स हैं कोर्ट्स के जो हैं, ओन कोर्ट्स के जो मीन्स हैं, दे हैव नॉट बीन एग्जॉस्टेड. तो चाहे मेरा केस यहाँ चल रहा है, फिर भी आई शैल नॉट रिफ्यूज टू अ रिक्वेस्ट फॉर कंसिलिएशन. ठीक है, भले ही केस चल रहा है कोर्ट्स में और आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कंसिलिएशन के लिए आ जाइए या आर्बिट्रेशन के लिए आ जाइए, so I am not entitled to refuse that request.